तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लो, इसका मैटर भी सॉर्ट हो गया। अब तुम्हें क्विक सॉर्ट कराया जाए। देखो, क्विक सॉर्ट का मैटर बिल्कुल सिंपल। Hello everyone, today we are going to learn about quick sort. So quick sort is basically divide and conquer algorithm. Its time complexity is big O of n log n. So we have, let us suppose this array. We'll take this pivot element, and so basically sorted array should be like, when we'll sort, finally output should be like, on the left hand side there should be elements which are less than equal to pivot, less than pivot, not equal to, and on the right should be greater than pivot. Okay, so here pivot is basically taken the last element in most of the cases. So let us see the program, how it is done. Swap function, everybody knows swap function. It will just give, A will be taking B's place and B will be taking A's place. Okay, that is the swap function. And integer partition, we have array low and high. Now what are low and high? Low is the first element, high is the last element. And I won't say first element and last element, it's pointing to first element and it's pointing to last element. And here basically we are choosing the last element as our pivot. So what is I? I is low minus 1. So let us take as example. This time new example we shall take. So four, 5, let us suppose 6 is the last element, and here 9, 3, 2. So I is here, basically low minus 1, low is here and high is here, and also this is pivot element. So what will happen? For loop is running from here to here to this element. If array of j is less than pivot element, so j is starting from here, j is right, is 4 less than 6? Yes, it is less than 6. Increment I. Now I will also get here and swap I and j. Swapping the same means no change, 4 will be here as it is. Okay, so next element is 9. 9 is obviously bigger than 6 pivot element, so this if loop will be not considered. Let's come here and swap the I plus 1. I is still here, I plus 1 means this element 9 will be swapped by this high, that is pivot element. Let us swap this. आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। कराऊं यो कोडिंग ना की जा रही। देखो, so what we'll get, we will get 4, 6, 3, 2 and 9. This will be our output, and return I plus 1. What we are returning? We are returning 1 here. The index we are returning, which is partition index, and which can be also called as pivot index.
So let us see the void quick sort. How the quick sort will work here. We have array low and high again. If low is less than high, then we'll come here pi. What we are returning here, pi. What we got, this element was replaced, I plus 1. It was at I plus 1 value was 1, 0 and 1. So we are getting here 1. So 1 minus 1, it will be 0. And what is low actually? Low is basically 0. Means if this is considered, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? so when you reach here, what happens? Quick sort took place. We got here 0, 0. Partition index we got 1. So here low will be 0 and 1 minus 1 will be 0 of course. So we got here 0. Here 2 and 4. 2 से लेके 4th index तक second partition. So what we'll do, quick sort on this one cannot be happen because it has less than 2 elements. And quick sort on this one, when we'll do quick sort, low is less than high, yes of course. Partition index, again partition will be taken place. So we'll go in partition, we'll check here I and j, again same process repeat. Yeah, same will be swapped, then we will go, I will be reached here we will have I plus 1 and high. I plus 1 means 9 and 9 will be swapping each other, means 9 will be last element. So we have to return I plus 1. Now this time I plus 1, what we are getting, we are getting I plus 1 as last element. So basically it's high. Got it? So partition index here, next go to next line, we will have low and pi minus 1, high minus 1. 0 से लेके high minus 1, which is 1, 2, 3, 4, 5. 0 से लेके 3 तक. This will be taking place. This quick sort, because 4th index, whatever we have 9, it's already sorted. It's the highest number possible here. So next one will be we have to go back and traverse to the and 0 से लेके 3 we have to sort again. We are quick sorting again, means again we'll be calculating the pi and quick sorting it. Okay, got it? It's a recursion, basically it's a recursion. Thank you. पूछा गया था x स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा,
ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सिंपल है, तुम्हें एक पिवट उठाना है। लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट को एज अ पिवट उठा लिया तुमने। अब तुम्हें इस एलिमेंट से जितने भी छोटे हैं उनको लेफ्ट लेके जाना है और जितने भी बड़े हैं उनको राइट लेके जाना है। 6 छोटा या बड़ा है? बड़ा है, इसको राइट रख लो। लेट्स से एक राइट एरे ले लिया, उसमें 6 डाल दिया। 8 राइट, 10 राइट, ठीक है। इसी चीज को तुम्हें रिकर्जन में करना है। अब तुम्हें लेफ्ट एरे के साथ यही चीज करनी है, राइट एरे के साथ यही चीज करनी है, ठीक है। एक मिडल भी बना लेना अगर बाय चांस कोई इक्वल आ जाता तो। वेरी सिंपल। इसका कोड दिखाऊं, मेरे पास एक एरे क्विक सॉर्ट, ये हमारा बेस केस है, क्योंकि बेस केस में क्या है, एरे जब हमारा 1 या 1 से छोटा होगा तो एरे रिटर्न कर दो। देखो लेंथ हमारी 1 या 1 से छोटी कब होगी? अभी 1 to 1 आ गया। लेट्स से 1 को पिवट उठाया, अभी 1 to 1 बन गया लेफ्ट वाला। लेट्स से इसका भी पार्टीशन हो गया, हमारा M पे आ गया 1 and 1 और राइट साइड आ गया 2। अब राइट पे एक एलिमेंट बच गया तो हमें बैक ट्रैकिंग करनी है। तो दिस इज द बेस केस। पिवट उठा लिया हमने फर्स्ट एलिमेंट रैंडमली, 3 एरे बना दिए। अगर हमारा एरे पिवट से छोटा है तो लेफ्ट, पिवट से बड़ा है तो राइट, नहीं तो मिडल। सिंपल। एंड फिर लेफ्ट वाले को सॉर्ट किया रिकर्जन में, उसको जोड़ दिया मिडल वाले से, और फिर राइट वाले को सॉर्ट किया रिकर्जन में। आई होप तुम्हें रिकर्जन आता है, अगर आता तो ये लाइन बहुत सिंपली समझ आ जाएगी तुम्हें। एंड इसको अगर मैं रन करूंगा तो 1 1 2 3 6 8 10 एंड ऑल सेट। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे?